be prepared for that. Walaikum assalam, Abu Bakr. All right, so let's start with probability. So probability होती क्या है? इसकी basic understanding तो I'm sure most of you would have. So probability, it's the chance of something happening. It's the chance of something happening, right? So if you say there's a 60% chance of rain, that's a kind of probability. Right? That's a kind of probability. If you say 50% chance of rain today in a particular city, it's ये हम probabilistic terms में बात कर रहे होते हैं. इसी को अगर हम as a probability represent करते हैं, इसको decimals में लिखते हैं. We can either say it's 0.6 probability, right? It's 0.6 probability, or we can say, for instance, it's 60 over 100, which is the same thing as saying 3 over 5 probability. So basically, इसको represent करने के different तरीके हो सकते हैं. We can represent it as a decimal. We can represent it as a fraction. These are the more common ones. But as a percentage भी हम लिख सकते हैं. लेकिन आप जो है आप इस पे stick करोगे. Most of the times, you will either write it as a decimal or as a fraction. ठीक है? So this is called probability, chance of something happening. अब इसमें बहुत सारी तो नहीं, इसमें कुछ O levels के अंदर तो there's some basics that you need to know of. So we will do those basics. इसके अंदर दो main चीजें हमने discuss करनी है. एक तो हमारे पास होती है something that we call a possibility diagram. We will talk about that. Possibility diagram. ठीक है? And the other is a probability tree. और इनको use करके different calculations जो हमने करनी होती हैं, we will talk about those as well. ठीक है? So this is going to be our focus. But I just wanted to give you a quick understanding of probability. तो वही जो आप अपनी normal everyday life में percentage की terms में बात कर रहे होते हो, उसी को अगर आप as decimal treat कर लो या as fraction treat कर लो, that's what probability is, right? तो इसमें 0 और 1 के दरम्यान में हमेशा ये number होता है. 1 का मतलब है there's a 100% chance of something happening. Right? 0 का मतलब है there is 0% chance, कोई chance नहीं है of that thing happening. जितना आप 1 के करीब होएंगे उतनी आपकी probability ज्यादा होगी, जितना आप 0 के करीब होगे उतनी आपकी probability कम होगी. ठीक है? So that's the general idea of probability. अब let's start with some examples that will clear these concepts for you. So let's start with this first example right here, in which we will be covering possibility diagram, right? अब देखिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, you have a 5-sided spinner. अच्छा, fair का मतलब क्या होता है हमेशा जब ये fair लिखा होगा, that means the probabilities are equal probabilities of everything, right? So basically आपके पास 5 numbers है वहाँ पे, 2, 3, 5, 7 and 11. It means all of those numbers have equal probabilities of occurring, right? Equal probabilities of occurring. 2 की भी वही probability है, 3 की भी वही probability है, 5 की वही probability है. So if you were to, for instance, find out, एक दफा आप इसको spin करते हो, तो आपकी probability of 3 कितनी होएगी? 3 is 1 out of these 5 numbers. तो 3 की probability क्या हो जाएगी आपके पास? It's going to be 1 over 5. Similarly for every other number, probability of 7 क्या होगी? It will also be 1 over 5. So इन सारे numbers की probabilities आपके पास क्या होंगी? They will be 1 over 5. Sub numbers की same probabilities हैं 1 over 5 because equal probabilities. Okay? Yes, Ahad, that's correct. Probability is always between 0 and 1. इससे बाहर नहीं हो सकती है. इन्हीं के दरम्यान में कोई number होता है हमेशा. ठीक है? Now, इन्हीं के दरम्यान में हमेशा number होता है. Yes? अच्छा, now let's look at this. अब इसमें हमारे पास क्या है? We have this game in which players spin this spinner twice. इस spinner को 2 दफा spin करते हैं, ठीक है? And then what they do is they add the 2 numbers together. क्या 2 दफा spin करते हैं, दोनों numbers को add कर देते हैं. अब इसको represent करने के लिए what they are doing is they have represented in the form of a possibility diagram. अब possibility diagram क्या होती है? Possibility diagram क्या होती है? Possibility diagram ये होती है
कि आपकी एक ग्रिड बना लेते हो इस तरह से, you have something written horizontally like this and you've got some other thing written vertically like this. ठीक है, अब क्योंकि 2 दफा स्पिन कर रहे हो उसको, आपने एक दफा उसको हॉरिजॉन्टल लिख लिया इस तरह से, एक दफा आपने उसको वर्टिकल लिख लिया उन्हीं नंबर्स को इस तरह से। ठीक है, अब दोनों दफा जब स्पिन करते हो आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हो। तो लेट्स अज्यूम ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्पिनिंग समथिंग, और ये जो वर्टिकल नंबर्स लिखे हुए दिस इज द सेकंड टाइम you are spinning something. So these numbers that you have inside that grid here, what they mean is, for example, if you think of this 12, ये 12 कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस लिखा हुआ है, प्लस मत का मतलब है इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिशन डायग्राम है यहाँ पे। 12 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? दिस इज 7 plus this 5 जो इसको correspond कर रहे हैं numbers, 5 plus 7 gives you 12. Similarly, where is this 5 coming from? This is the sum of this 3 here and this 2 here, so 3 plus 2 give you 5. तो आपको उसने क्या कहा है, आपने कंप्लीट करनी है डायग्राम, इन नंबर्स को आप ऐड कर लें, सबको इन सब नंबर्स को ऐड कर लें। व्हाट डू यू गेट? यू गेट 2 plus 5, 2 plus 5, what is that? That's 7. 2 plus 7 is 9, 2 plus 11 is 13, and so on for the rest of them. Okay, so in some numbers को add कर लेते हैं। 3 plus 2 is 5, 3 plus 3 is 6, 3 plus 5 is 8, 3 plus 7 is 10, 3 plus 11 is 14, and so on. अब इन सब numbers को complete कर दोगे, यहाँ पे इन सब को add करते जाओगे। So this is 7, sorry, this is 7, this is 8, we have 16 here, 7 plus 2 is 9, then 10, and 7 plus 7 is 14, 7 plus 11 is 18, 11 plus 2 is 13, then 14, 16, 18, and then you have 22. So that's your complete possibility diagram. Okay? ये आपने first part यहाँ पे complete कर दिया, आपने possibility diagram को complete कर दिया। 7 over 5, where is that coming from? And Abu Bakr, I'm not sure what exactly you're asking about. Where is that coming from? Let me just look at the numbers here. 7 and 5. Where is that? No, Rafi, that's not possible. 7 over 5 नहीं आ सकता. 7 over 5 तो वो 1 से बड़ी हो जाएगी ना? Instead of 12 where? 12 कहाँ पे लिखा हुआ है इधर? This 12 here? No. So what we are doing is we are basically adding the numbers. ये plus लिखा हुआ है यहाँ पे, जो corresponding numbers हैं उनको add करें. So this 12, where is this coming from? This is coming from the sum of the 7 here and this 5 here. That gives you 12. ठीक है, उसने कहा add करना आपने इन दोनों numbers. Divide नहीं करें, इनको add करें. Okay? अच्छा, अब वो कहते हैं find the probability that the total of the two numbers is a prime number. अब आपने क्या करना है, जब आपने एक दफा इसको रिप्रेजेंट कर लिया इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर जब रिप्रेजेंट कर लिया आपने, आप जब से काउंट कर लें ये टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके पास इन दिस बॉक्स हियर। इफ यू लुक एट द बॉक्स हियर, हाउ मेनी टोटल नंबर्स डू वी हैव? वी हैव 25 टोटल नंबर्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ आउटकम्स, द नंबर ऑफ outcomes satisfying our condition। जो भी आपने कंडीशन लगाई हुई है, जो जितनी आउटकम्स उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, that divided by the total number of outcomes, the total number of outcomes। जितनी आउटकम्स आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं उन सब को आप डिवाइड कर दो किसके साथ? जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन इज दैट यू हैव टू हैव अ प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर्स कौन से हैं इसके अंदर? आप यहां पे देख लें, प्राइम नंबर्स 7, then you have 13, then you have 5 here as well, and 7,
then you have 13. These are all the prime numbers in this diagram. So how many are these? Have I counted all of them? So I'm getting 6 here. There are 6 prime numbers, right? So 6 prime numbers out of 25. आप क्या कहोगे? This probability is therefore 6 over 25. The number of outcomes that satisfy our condition, they were 6. Out of the total outcomes, they were 25. So 6 over 25. Okay? Is that okay? Abu Bakr, please wait for a while. We're going to come to all of them. ठीक है? हम उन सारों पे आते हैं gradually. Just give me some time. We will come to all of those concepts gradually. ठीक है? अभी थोड़ा सा wait करें. Just keep listening and watching what we're doing here. Okay? Walaikum assalam, Aisha. All right. Acha. So then it says, find the probability that the total of the two numbers is a perfect square. Perfect square कौन थे इसके अंदर? यानी तो किसी इंटीजर का स्क्वायर है. You have a 4 here. ठीक है? 4 के बाद next square क्या होता है? 9. 9 कौन से आ रहे हैं? You've got 9 here. You've got 9 here. And that's it. 9 के बाद अगला कौन सा होता है? 16. 16 कितने आ रहे हैं? 16 here. You've got 16 here. Any other 16? No. So that's all the perfect squares we have. So 4, 9, 16. Next is 25. 25 is not here. तो हमारे पास ये total 5 numbers आ गए. ठीक है? So 5 out of 25. तो perfect square की probability क्या हो जाएगी? It's going to be 5 out of 25, which is the same thing as saying 1 out of 5. Okay? So that's your probability for this. अच्छा, वो क्या होता है? In the next part it says, in another game, players spin it twice and multiply the two numbers obtained. अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे थे? First case के अंदर, they were adding the two numbers. Right? They were adding the two numbers obtained. Now the game has changed and they're instead multiplying the two numbers obtained. अब दोनों numbers को multiply करते हैं. Without drawing another possibility diagram, वो कह रहे हैं कि आपने दोबारा ये बनाने की जरूरत नहीं है. Without that, just write down the probability that this product is a prime number. अच्छा, now think about this. Spinner के ऊपर कौन-कौन से numbers लिखे हुए हैं? We've got these numbers. Right? We can write them here. We have 2, 3, 5, 7, and 11. आप एक दफा spin करते हो इसको, इनमें से कोई नंबर आ जाता है. Right? Let's say आपके पास 3 आ गया. आप इन्हीं को दोबारा spin करते हो, आपके पास एक और नंबर आ जाता है. It could be any other number. Let's say 2. जो भी दो नंबर आते हैं आपके पास, आप उनको multiply करते हो और आप देखते हो आपके पास रिजल्ट क्या आता है. Multiply करके मेरे पास इसका रिजल्ट, एक दफा मेरे पास अगर first spin पे आप मेरे पास अगर 3 आ रहा था, मेरे पास फर्स्ट स्पिनर के ऊपर फर्स्ट टाइम मैंने स्पिन किया, आई वाज गेटिंग 3. सेकंड टाइम आई स्पन इट, आई गॉट 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज 6. वो कह रहे अब ये गेम है कि आप मल्टीप्लाई करते हो इसको. ओके, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर होएगा. अब देखिए प्राइम नंबर कब हो सकता है? पहला, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 हो सकते हैं. या तो 1 हो सकता है फैक्टर, या फिर उसका फैक्टर वो खुद हो सकता है. फॉर एग्जांपल 7 जो है, इसके कौन से फैक्टर्स हैं? या इसका 1 फैक्टर है या ये नंबर खुद फैक्टर है. यही 2 पॉसिबिलिटीज है. अगर आप मल्टीप्लाई करके कोई और नंबर बनाओगे, फॉर एग्जांपल 3 into 2, अब इट्स नेसेसरी कि ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे. जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करके करोगे, दोनों फैक्टर्स हैं. राइट? ये कोई भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता. कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं हो सकता जो इनको मल्टीप्लाई करके बन रहा हो. So the probability that you would get a prime number in this case when you multiply these numbers is just 0. ये possible ही नहीं है आपके पास कोई प्राइम नंबर आ जाए. So that's why आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे. It's just simple logic कि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्राइम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है इस तरह से, it cannot be a prime number unless one of those numbers was 1. अगर एक नंबर 1 होता फिर पॉसिबल हो सकता था. यहाँ पे 1 को तो नहीं मल्टीप्लाई करे, 1 के अलावा कोई नंबर है. So this cannot be prime. The probability of this will be 0. Possibility diagram हम इसको कहते हैं जब हम किसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें 2 डायमेंशंस के अंदर. एक चीज हॉरिजॉन्टल आ गई हमारे पास, एक चीज इस तरह से वर्टिकल आ गई. राइट? वालेकुम अस्सलाम अहमद. So एक तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होती है इन प्रोबेबिलिटी. ठीक है? प्रोबेबिलिटी के अंदर एक ये रिप्रेजेंटेशन होती है.
Now, let's think of a simple experiment. Let's think of a simple experiment. No, Abu Bakr, 1 is not a prime number. 1 is not a prime number. Fajr, both are fine. So you can say 0 over 25 if you want, because that's just 0, right? That's a 0. So you can write both ways and they are both correct. कोई मसला नहीं है. अच्छा, अब देखिए, let's do an experiment. Let's do an experiment. Let's say हमारे पास क्या है? Let's say we're tossing 2 coins. We're tossing 2 coins. ठीक है. इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. मतलब हर कॉइन के ऊपर 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं. वन इज हेड एंड द अदर इज टेल्स. 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक तो सिंपल हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन तो ये होती है. अब लिस्ट कर लें आउटकम्स को हम लिस्ट कर लेते हैं इस तरह से. लेट्स से हम इस तरह लिख रहे हैं, फर्स्ट आउटकम एंड द सेकंड आउटकम. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे. अच्छा, फर्स्ट आउटकम लेट्स से हेड है, सेकंड हेड्स. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी होगी हेड्स. अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट हेड्स आ जाए, दूसरा टेल्स आ जाए. देन यू कैन हैव फर्स्ट टेल्स एंड सेकंड हेड, एंड देन यू कैन हैव टेल्स. दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, एक तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज को. इसको हम कहते हैं लिस्ट करना. हमने आउटकम को लिस्ट कर लिया. दूसरी रिप्रेजेंटेशन हमने अभी देखी, दैट वाज अ पॉसिबिलिटी डायग्राम. पॉसिबिलिटी डायग्राम में हम क्या करते हैं? हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स से हम एक कॉइन को हम इस तरह हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर लें. सो यू कैन हैव हेड्स और टेल्स. एक ये पॉसिबिलिटी आ गई. ठीक है, वी हैव heads here and tails here, and similarly we've got heads here and tails here. आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आउटकम्स को, such that we have a grid like this. ठीक है, अब फर्स्ट टॉस मैंने ऊपर लिखा है, फर्स्ट कॉइन का मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया है. So this is my first coin, horizontal. This is my second coin, that is vertical. ठीक है, अब इसमें आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो चारों पॉसिबिलिटी. सो यू हैव वन आउटकम हियर, यू गॉट अनदर आउटकम हियर, यू गॉट अनदर आउटकम हियर, यू गॉट अनदर आउटकम हियर. इसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम. 2 डायमेंशंस के अंदर रिप्रेजेंट करना, जो अभी हमने देखा पहले, इसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम. ठीक है, 2 डायमेंशंस के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, एक वर्टिकल रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये दिमाग वाला सर्किल का रिप्रेजेंट कर रहा है हेड्स. ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट में टेल्स आ जाए, सेकंड में हेड्स आ जाए. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट में हेड्स आ जाए, सेकंड में टेल आ जाए. ये फाइनली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों के अंदर टेल्स आ जाए. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ पॉसिबिलिटी डायग्राम. लेकिन पॉसिबिलिटी डायग्राम की एक लिमिटेशन है, एंड दैट लिमिटेशन इज कि हम जैसे ही 2 इवेंट से ज्यादा इवेंट्स पे चले जाते हैं, we can no longer use a possibility diagram there. 2 इवेंट से ज्यादा हो जाएंगे जैसे ही, we will be restricted. हम उससे आगे नहीं जा सकते. रीजन है इसके 2 डायमेंशंस भी बना सकते हैं ना. हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो वो तो हमें पेपर से बाहर आना पड़ेगा, राइट? पेपर से बाहर 3 डायमेंशंस करने के लिए आपको आना पड़ेगा. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो देयर इज अ थर्ड रिप्रेजेंटेशन दैट वी हैव, एंड दैट्स कॉल्ड अ ट्री डायग्राम. And that is the most common one that you will be dealing with in O levels, and in general whenever you are dealing with probabilities. आपके पास ये बहुत ज्यादा यूज होगी. That's called tree diagram. Tree diagram में हम कैसे represent कर सकते हैं? So मानो basically what I'm saying is कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 coins के बजाय, let's say we are tossing 3 coins, हम यहाँ पे इसको चेंज कर लें. Let's say we are tossing 3 coins, right? इन coins को हम 3 कर दें. अब इसको लिस्ट तो कर सकते हैं हम, ठीक है. We can list down all the possibilities. Remember, एक टॉस के अंदर 2 possibilities है, heads and tails. अगर हम लिस्ट करना होता सबको, हम लिस्ट तो कर सकते हैं. We can say heads, right? We can make heads, tails. We can say head, tail, heads. We can say tail, heads. Then we can have, others, heads. हमने कर लिया head, tail, right? We can have tail, head. We can have, so वो भी हो गया. We can have tail, head, tail,
or we can have tail, tail, head, or we can have tail, tail, tail. Right? ये 8 possibilities आप list कर सकते हो. But the problem here is we cannot make a possibility diagram here. Possibility diagram यहाँ पे नहीं बना सकते. Possibility diagram में आपने करना क्या होता है, जितने भी events हैं आपके, उनको different तरह से represent कर लें different dimensions के अंदर. एक आपने horizontal बना लिया इस तरह से, कोई चीज आपने vertical बना ली. अब अगर तो हमारे पास 2 coins होते सिर्फ, फिर तो हम कर सकते थे. We could have heads here and tails here for the first coin. We can have heads here and tails here for the second coin. लेकिन अब थर्ड कॉइन को कहां पर रिप्रेजेंट करें? थर्ड को तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं 2 कॉइन्स के लिए, राइट? व्हाट डू वी डू फॉर 3 कॉइन्स? वी आर लिमिटेड बाय our ability to only represent 2 dimensions on a piece of paper. तो हम इसको 3 dimensions में जब जाएंगे तो ये possibility diagram हम नहीं use कर सकते. So what we instead have to do is we have to make a tree. 2 से ज्यादा आपके पास events हो तो आप tree बनाते हो. 2 पे भी बना सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर तो आपको tree बनाना पड़ता, और कोई option नहीं बचती. ठीक है? So that's what we do next. आप इस in outcomes को basically tree से represent कर सकते. Okay, so that's the third way to represent things, and that's using a tree. Okay, and that's what we're going to spend most of our time now on. अब tree में क्या आपके पास steps होंगे? There are 3 coins, right? First toss किया आपने. There are 2 possible outcomes. You can either have heads or you can have tails. अच्छा, जो outcomes होती हैं, जो results होते हैं, आप यहाँ पे branch के end पे लगते हो. This is head, this is tails. इनकी probabilities जो होती हैं वो आप यहाँ पे branches पे लगते हो. For example, if it's a fair coin, heads की probability भी 1/2 होगी, tails की probability भी 1/2 होगी. ठीक है? That's for the first coin. अच्छा, अब second coin में क्या possibility है? आपके पास उसमें भी 2 और possibilities होंगी. ठीक है? Second coin की भी वही 2 possibilities. You can either have heads or you can have tails. इसी तरह अगर पहली दफा tails आ गया था तो दूसरे दफा फिर वही possibilities हैं. You can have heads here or you can have tails here. Again, you've got 1/2 probabilities for all of them. इसी तरह फिर third time आप एक और coin toss करते हो. You've got another set of branches here, and they look like this. ठीक है? So you've got head tail here, you've got head tail here, you've got head tail here, and you've got head tail here. ये आपके पास total 8 possible outcomes होंगे. कि जो ऊपर लिस्ट की थी हमने आउटकम्स, वही आउटकम्स आपके पास यहाँ पे भी शो हो रही है, राइट? सो देखें, अगर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दें प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1/2, 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 दिस इज 1/2. हर दफा कॉइन टॉस करेंगे, प्रोबेबिलिटीज 1/2 होंगी हेड्स और टेल्स की. ठीक है? ये सारी प्रोबेबिलिटीज 1/2 हैं. नाउ ऊपर जो हमने सारी लिस्ट की थी पॉसिबिलिटीज, वो सारी देखें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं. हाउ? लेट्स थिंक अबाउट दिस. सो ये आपके पाथ बेसिकली शो कर रहा है. दिस इज हेड्स, दिस इज हेड्स, दिस इज हेड्स. ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पहला हेड आ जाए, दूसरा हेड्स आ जाए, तीसरा टेल्स आ जाए. दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी. ठीक है? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? पहला हेड्स आए, दूसरा टेल्स आ जाए, तीसरा हेड्स आ जाए. That's the third possibility that you had here. Okay, then you have heads, tails, and then tails. Okay, that's this possibility here. This one, that's the fourth possibility. Okay, and you can have tails, heads, heads. That's the fifth possibility. Tails, head, head. Okay, and you have tail, heads, tails. That's another possibility. This one, right? You can have tails, tails, heads. That's this possibility. And then finally you have tail, tail, tails. That's this possibility. Right? So वही possible outcomes हमने list की थी ऊपर, उनको हम इस तरह tree से represent कर सकते हैं. ठीक है? हम tree को पढ़ते कैसे हैं? We go from left to right. हम for example हमने देखना है ये कौन सी outcome आ रही है यहाँ पे. This is basically coming from this path. पहला head आ रहा हो, दूसरा tail आ रहा हो, और फिर तीसरा tail आ रहा हो दोबारा से. Right? अब जब लिस्ट करते हैं पॉसिबिलिटीज, वहां पे तो हर एक की आउटकम में नजर आ रहा है.
इसकी आउटकम, इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल TTH की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज जस्ट 1 आउट ऑफ द 8 पॉसिबल आउटकम्स, दैट्स 1/8। जब हमने इसको ट्री से रिप्रेजेंट किया तो हम क्या कहेंगे? वी हैव दिस हेड्स, तो वो वाली आउटकम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। सो TTH, अगर हम यहां पे देखें उस आउटकम को, दैट्स बेसिकली दिस पाथवे दैट वी हैव टू फॉलो। T, E and then H। यहां से वही प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? जब भी हम ट्री में इस तरह हॉरिजॉन्टल जा रहे होंगे, यहां पे जी आउटकम बनती है, क्या बन रही है? TTH। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? We look at this probability, 1/2, multiplied by this probability, that's 1/2 again, multiplied by this probability. Why? Because this is saying first tail ho and second tail ho and third heads ho, ये तीनों एक टाइम पे होने चाहिए कि फर्स्ट टेल्स आए, सेकंड टेल्स आए, थर्ड हेड्स आए। ऑल ऑफ दीज थ्री कंडीशंस हैव टू बी मेट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। इनको, इन तीनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स 1/2 into 1/2 into 1/2। तो ये ट्री से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, that will also turn out to be 1/8, and you can do that for every single branch there, every single possible set of outcomes। उसके लिए आप ये probability calculate कर सकते हो like this, okay? So that's the concept of a tree basically, but इसके अंदर फिर बहुत सारी इसके अंदर कुछ variations आती हैं, ठीक है? We will look at those variations using these questions now, ठीक है? Now let's look at a few problems related to trees now. Okay, so I'll ask you to just have a look at this tree, and I'll just take a 1-minute break. There's a Azan going on here. We'll also try to be a bit quick so we can finish early, so that we have time for namaz. You can have a look at this question, try to think of it, how to solve this, and then we will do it together. I'm just taking a 1-minute break right now. All right. Walaikum assalam, Manahil. Okay. Now, a very important thing to remember about trees is किसी भी एक पॉइंट से जिसको हम नोड कहते हैं, वैसे ये एक पॉइंट है, लेट्स से इससे जो ब्रांचेस जा रही होंगी, इनका सम हमेशा 1 होएगा। We have some number here, you've got another number here, इनका सम हमेशा 1 होता है, right? So that's an important thing to remember about trees. कोई भी एक पॉइंट से दो ब्रांचेस जा रही हो, इनका सम हमेशा 1 होता है, की probability का सम हमेशा 1 होता है। This 5/9, this number, they should sum up to 1. Similarly, these numbers should sum up to 1. Okay. But now this is going to clear one very important concept for us, and that is what happens when you do things without replacement or with replacement. अब देखिए यहाँ पे क्या है? There's a bag that contains 6 red counters and 4 blue counters. Okay, now let me draw something here. So let's draw a box here, or let's say a triangle. Let's draw a triangle. Walaikum assalam, Manahil. So let's say we got this triangle here. Looks like this.
And in this triangle, let's say this is the bag that we have there, and we have 6 red counters in this. Okay, so let's say we've got 6 red counters in this. 1, 2, 3. Let's draw some circles there. Or yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We've got 6 red counters. And we have 4 blue counters. 1, 2, 3, and 4. Okay, we've got 4 blue counters and 6 red counters. This is what we have. Now, what are we doing? 2 counters are taken from the bag at random. Okay. अब इस बैग से हम 2 counters निकाल रहे हैं at random without replacement. What does that mean? When I take 1 counter out of it, I'm not going to replace it back in the bag. इसको वापस नहीं रखूंगा मैं. इसको वापस नहीं रखूंगा. ठीक है? So without replacement, इसको replace नहीं करूंगा मैं बैग के अंदर. Okay, we're not putting it back. Yes. So let's talk about the first counter. हमने पहला काउंटर निकाला, उसमें क्या probabilities होंगी? That's fairly straightforward, right? There are 6 red counters. Red की probability is 6/10. What about the probability for blue? That's 4/10. So that's straightforward. Because that's 4/10 here. Okay. Now, what happens when you take out the second counter after that? अब देखिए, एक काउंटर हमने बाहर निकाल लिया ऑलरेडी. एक काउंटर ऑलरेडी बाहर निकाल लिया. अब अगर हमने पहला काउंटर रेड निकाला है बाहर, if the first counter was red, जो हमने बाहर निकाला है, how many red counters are we left with inside? We're left with only 5 red counters. Blue counters कितने हैं अभी भी? Blue counters are still 4. और total कितना है? The total is 9. Okay, एक हमने निकाल लिया बाहर, so the total is only 9 now. Okay, red की probability क्या थी? That was 5/9. 5 divided by this total, that is 9. Blue की क्या हो जाएगी? That will be 4/9. Right? So we write 4/9 here, therefore. Similarly here, if the first counter that we took out, if that was blue in color, what does that mean about the state of this bag at this point? हमारे पास red counter कितने रहे अभी भी? अगर हमने पहला blue निकाला, red counter कितने बचे? There are still 6. अगर हमने blue निकाल लिया तो blue counters कितने रह गए हैं बाकी? We started with 4. We should only have 3 left inside. Okay, and the total is 9. तो red की probability क्या हो जाएगी? That will be 6/9 because we still have 6 red counters. Out of the total, that's 9. And the blue counters now left are 3. So that's 3/9 here. Right? So this is how we fill out this probability tree here. Does this make sense? Yes, Aliza, that's exactly correct. So this is how you fill this table out. जब आपने table fill कर लिया, there's an important thing, there's an important rule that you need to remember here. Whenever you're dealing with trees, जब आप calculations कर रहे होगे ना, calculations हमेशा कैसे होंगी? Tree के अंदर, going horizontally, you're always going to multiply things, and going vertically, you're going to add things. And there's a reason for that. Let's think about this. Let's think about this. अगर हम देखें, what is the probability? What is the probability? अभी हम second question को भी मैं ignore कर रहा हूँ, second point को. I'm just trying to explain this concept right now. First, what is the probability that we have first counter is red, and the second counter is blue? What is this probability? How would you figure this probability out? देखिए, first counter के red होने की probability क्या है? 6/10, right? So we say 6/10. Whenever we have an and there, जब भी हमारे पास and होता है, हम क्या करते हैं? We multiply. And होता है तो उसका क्या मतलब होता है? हम multiply करते हैं. Why do we do that? Because both of those things are happening together. They're happening at the same time. And का मतलब ये भी होता है, we can
this is those events are happening simultaneously, they're happening together at the same time, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और होता है, इसका मतलब होता है वन और द अदर, वन और द अदर। ठीक है, or any of the two in fact, so at least one, you can say at least one of the two, at least one of the two, because दोनों भी हो सकते हैं, at least one of the two। इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम ऐड करते हैं, जब भी और होता है उसमें हम ऐड करते हैं, जब एंड होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए हमें क्या फिगर आउट करना था, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लू। सेकंड ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/9, so we multiplied with that, 4/9 से मल्टीप्लाई किया, and that gives us our result 24/90, which is going to be something 24/90, that's 4/15, yeah, so that's 4/15। ठीक है, अब ट्री में आपको ना ये सोचना नहीं पड़ता इतना ज्यादा, ट्री का फायदा ये है, ये एंड और में आपको ना इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। Why? Because tree takes care of it automatically. Tree automatically handles that. How does a tree handle that? अब होता ये है, ट्री के अंदर जब भी आप हॉरिजॉन्टली जाते हो, when you go horizontally in a tree like this, horizontally, जब भी आप हॉरिजॉन्टली जाते हो, things are happening simultaneously, कि पहला रेड आ जाए एंड सेकंड रेड आ जाए, the first red and second red, this is what this represents, it's for this path here represents first red and second blue। horizontally जाके लेफ्ट टू राइट जाते हुए, horizontally का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमेशा चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड ब्लू। ओके, जब भी हॉरिजॉन्टली जाते हो लेफ्ट टू राइट, यू मल्टीप्लाई। हॉरिजॉन्टली आपने हमेशा ट्री में मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, जब आप वर्टिकली जाते हो, which we'll look at in the second part here, part B के अंदर, जब भी आप वर्टिकली जाते हो, things do not happen simultaneously, it can be either one or the other। जब आप वर्टिकली जाते हो, आप इस तरह सोचें, there's an or there। हॉरिजॉन्टली जब होता है, there's an and there। हॉरिजॉन्टल होता है तो and आ रहा होता है, वर्टिकली जो है और आ रहा होता है। क्या मतलब, अगर मैं इन दोनों ब्रांचेस को कंसिडर करूं, if I consider red and I consider blue red, अब there is an or between those two cases। क्या मतलब कि या तो हमारे पास दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती, नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि रेड भी आ जाए और ब्लू रेड भी आ जाए। both things cannot happen at the same time, it's either this or this, right? either RR or BR, दोनों में से एक हो सकता है। जब आप वर्टिकली जाओगे, आप दोनों को ऐड किया करोगे। Now let's look at part B here। आपने ये याद रखना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमने मल्टीप्लाई करना है और वर्टिकली हमने ऐड करना है। ठीक है, ये अब याद रखेंगे अभी। Now let's look at part B here, वो क्या कहता है, calculate the probability that both counters are the same color। both counters are the same color। Now what could be the possibilities here such that both counters are the same color? एक तो आपके पास ये केस हो सकता है that they're both red, this is one possibility, both red। the other possibility could be that they're both blue, right? या दोनों ब्लू हो। आप क्या करोगे, ट्री पे जाके देखोगे रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/10, 5/9, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, we multiply these numbers, we say 6/10 multiplied by 5/9, this is RR। ये क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 30/90, which is just 1/3। this is this probability। ठीक है, what about the probability for blue?
4/10 into 3/9, they're both happening simultaneously. Left to right जा रहे हैं tree के अंदर. We say 4/10 into 3/9. What does that give us? 12/90, which is 2/15. ये हमारे पास दोनों की अलग अलग probabilities आ गई. Then we add these two together. इन दोनों को add कर देंगे. अब vertically जाने ना, horizontally तो हमने multiply कर दिया. अब vertically देखना, ये दो numbers आ रहे हैं हमारे पास. इन दोनों को हम add कर देंगे. So we basically say 1/3 plus 2/15, and you see whatever that returns. आपके पास calculator allowed है आपके paper के अंदर. You can just do it from your calculator. Don't do it manually. That's going to give us 7/15. Okay, that's this probability. So tree के अंदर the golden rule is left to right you multiply, top to bottom you add. Okay, so remember that when you're doing any calculations using tree. ठीक है, अब इसमें एक हम प्रॉब्लम देखते हैं. अच्छा देखें, ये हमेशा नहीं होगा कि आपके नंबर छोटा होएगा. If 9 for example यहाँ पे नंबर जो है वो कम हो रहा है, it's not going to be the case every single time. अब यहाँ पे इसी के अंदर अगर उसने हमें कहा होता कि this is with replacement, अगर ये with replacement होता, ठीक है, तो उसका ये नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये इसको erase कर देते हैं. How would we treat the case in this case? अब हम कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर? With replacement, we have that same container. Okay, in that container we've got a few blue balls and we've got a few red balls. ठीक है, हमारे पास 4 blue balls हैं इसके अंदर और हमारे पास 6 red balls हैं. What happens in this case? First ball की तो वही probability है. First time हम निकालेंगे तो क्या probabilities होंगी? 6/10 red की probability, 4/10 blue की probability. ये तो first time तो वही रहेंगे. What happens the second time? Second time भी वही probabilities है, because जो भी आपने ball निकाली आपने वापस रख दी. अगर आपने first time red निकाली थी, निकालने के बाद आपने उसको वापस रख दिया. ठीक है, जब आपने वापस रख दिया, distribution is still the same. There's still 4 blue balls, there's still 6 red balls. तो यहाँ पे सारी probabilities कैसे आएंगी फिर? You have 6/10 here, you've got 4/10 here, you've got 6/10 here, you've got 4/10 here. तो जब आपकी with replacement होता है, उसका मतलब है आप वापस रख रहे हो balls और आपके total भी वही रहता है और जो initial probabilities थी वो भी change नहीं होती. तो आपके tree उस case के अंदर अगर with replacement होता, ये probabilities आपकी आ रही होती. ठीक है, और इसको यूज करके फिर कैलकुलेशंस का तो वही तरीका होगा जो हमने वहां पे देखा. Does this make sense to everyone? Is this clear to everyone? Okay, now let's look at a few questions, few more questions on this that will clear some concepts for us. And that's pretty much all that we need to know about probability really. इसमें बहुत ज्यादा की complication नहीं आती है. आपको बस ट्री सही तरह से उससे डील करना आना चाहिए, उस तरह फिल करना है. Then for calculations from the tree, you should remember these rules that we have discussed here. But let's look at a few questions now that will clear some of these concepts for you. So let's have a look at this one. Okay, let's do this. Minahil, we did the possibility diagram at the start. Okay, now Ben travels to work by bus, by bicycle, or by car. The probability that he travels by bus on any day is 0.5. The probability that he travels by bicycle on any day is 0.2. And the tree diagram here shows these probabilities. ठीक है, 0.5 ये है. Find the values of P, Q, and R. इसमें ये probabilities find करनी है हमने. P, Q, R की probability, P, Q, and R की values. So you can see them here.
So that's fairly obvious. If this is 0.5, this is 0.2, R is therefore going to be 0.3 here. Okay? This is 0.3. This is 0.3. 1 में से माइनस कर दिया, राइट? मैंने आपको कहा था कि ब्रांचेस की ये सम जो होना चाहिए, इट शुड बी 1. तो 1 में से 0.5 माइनस किया, 0.2 माइनस किया, लेफ्ट विद 0.3. ठीक है? अब प्रोबेबिलिटीज तो चेंज नहीं हो रही हैं. If it is not specified, then this is without replacement. Okay, so yeah. So if it's not specified, you're going to assume without replacement. अगर नहीं specify किया हुआ तो without replacement assume करना है आपने. Okay, without replacement assume करना, not with replacement. You have to understand the context as well, because यहाँ पे for instance देखें, यहाँ पे आप for instance देखें कि आपके पास क्या है, यहाँ पे तो replacement without replacement का कोई concept ही नहीं है, right? इसके अंदर आपके पास कोई without replacement और with replacement का कोई concept नहीं है, because ये तो बस में जाने की probability है, bicycle में जाने की probability है, इनका तो आपस में कोई relationship as such नहीं है कि आप कोई चीज वापस रख रहे हो यहाँ पे, right? That's why these probabilities are remaining the same. वो change नहीं हो रही है, उसने आपको कुछ नहीं बताया कि probability same रहेंगी, different होंगी. उसने आपको यहाँ पे in fact दिखा दिया है कि बस की probability पहले भी 0.5 के बाद में भी 0.5 है. In all cases, वैसे you will see in most cases you will be given whether it's without replacement or with replacement, wherever you need it. जहां भी आपको उसकी जरूरत होगी, for example in case when you're taking something out from somewhere, ठीक है, किसी बॉल, किसी बैग से कुछ निकाल रहे हो, किसी कंटेनर से कुछ निकाल रहे हो, वो आपको बताएगा क्या होगा with replacement or without replacement. But if it's not given कि आप दो चीजें एक साथ निकाल रहे हो for example कहीं से, या आप दो लोगों को select कर रहे हो इकट्ठे, आप you will see questions like these. आपके पास एक ग्रुप है, a group of 10 people, there are let's say 5 or let's say 6 boys हैं, and there are 4 girls. Okay, आपसे वो कहते हैं 2 people are chosen at random. 2 people are chosen at random. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या assume करोगे? आप ये assume करोगे कि जब आप पहला आप select करते हो तो उसको आप वापस नहीं डाल देते दूसरा select करने से पहले. That person will remain selected और बाकियों में से फिर आप select करोगे. That's why in such cases you will assume it's not specified. जब नहीं specify किया हुआ, it's without replacement. क्या मतलब कि अगर आपसे वो कहता है find the probability that the first person is a boy and the second person is a girl, what is this probability? How do you figure this out? First आपने select किया, that is going to be 6/10. That's fairly straightforward. But what about the second being a girl? Second girl की क्या probability है? आपने जब first boy select कर लिया, girls कितनी है अभी भी? There's still 4 girls. However, the total has changed now. The total has changed. It's 6/10 into 4/9 now. Right? अब यहाँ पे देखिए उसने mention नहीं किया होगा इस तरह के cases में with replacement है without replacement है, लेकिन आपको context से समझ आना चाहिए. 2 लोग select कर रहे हो, एक को select करके वापस ना उसको रखोगे उन 10 लोगों में, तो दूसरे में आपके पास possibility सिर्फ 9 रह जाएगी. So you have 4/9 here. So when it's not specified, you assume without replacement. Okay? So you have to understand the context there as well. Okay, so Minay, let me repeat. What I'm saying is you have these people. You have 10 people in total. Okay, you've got 10 people in total. You've got 6 boys and 4 girls among them. You want to choose 2 people out of them at random. 2 people are chosen at random. What is the probability? The first is a boy and the second is a girl. How do you find this probability? अच्छा, 10 लोग हैं, पहले boy के होने की क्या probability है? You've got 6 boys out of 10, that's just 6/10. And that's fairly straightforward. अब second girl होने की क्या probability है? अब देखिए इस point के ऊपर how many people do you have in total? एक already आपने select कर लिया, the first boy. How many people do you have in total? You've got 9 people in total, and out of them 5 are boys and 4 are girls.
because एक boy आपने पहले select कर लिया already. So what are you left with? You got 4 out of 9 girls. So second girl होने की probability क्या है? That's 4 out of 9. So this is the probability that first will be boy and the second will be girl. Okay, so यहाँ पे एक तरह से without replacement वाला concept use हो रहा है और उसने वहां पे specify नहीं किया हुआ आपको context से समझना है खुद से आपने क्योंकि 2 लोग select करने थे क्योंकि तो एक select करके आप उसको वापस तो नहीं रखोगे आप बाकियों में से फिर दूसरा select करोगे. Okay, so now Abdul Ghani's question is, what if it was 2 boys? So let's do that. What is the probability that both of them are boys? What is the probability of the first being boy? That is 6 over 10. अब जब आपने first select कर लिया boy, how many boys do you have left? You have 5 boys left. Out of how many? Out of 9 people. So that's 6 over 10 into 5 over 9. That is the probability of both being boys. Okay? So यहाँ पे आप वही concept use कर रहे हो without replacement वाला. Is that okay? Yes, it's not specified, right? It's not specified. Yes, in this question, it's not specified. We have to understand the logic there, right? आप 2 लोगों को select कर रहे हो. आपने 2 लोगों को select करने out of 10. आप इस तरह तो नहीं select करते कि आपने एक select कर लिया तो उसको वापस आपने भेज दिया दोबारा उनमें से select किया. उसमें तो ये भी possible है. For example, let's say these are these people A, B, C, D, and so on until J. अगर आपने पहली दफा select किया आपने B को सेलेक्ट कर लिया आपने पहली दफा लेट्स से आपने C को सेलेक्ट कर लिया अब C को आपने सेलेक्ट किया आपको पता चल गया फर्स्ट इज C तो आप इसको C को क्या वापस रख दोगे उसके अंदर C को वापस तो नहीं रखोगे वहां पे क्योंकि फिर तो ये भी हो सकता है कि सेकंड टाइम दोबारा इसी बंदे को सेलेक्ट कर लो दोबारा C को सेलेक्ट कर लो आप 2 लोग तो नहीं सेलेक्ट कर रहे होगे आप तो उसी बंदे को दोबारा से सेलेक्ट कर रहे होगे दैट डजंट मेक एनी सेंस राइट इफ यू हैव टू सेलेक्ट 2 पीपल अगर आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो उसको आप वापस नहीं रखोगे उसको वापस रिप्लेस नहीं करोगे right so you have to understand that by logic even if it's not mentioned so the thumb rule you can use here is if it's not specified you assume that this is without replacement ठीक है अगर नहीं specify किया होगा you will assume it is without replacement okay so I think yeah so we will take a namaz break because it's going to take a bit more time before we are able to end. So we will have a break in the middle. We will have a break in the middle then. But let's complete this question and then we'll do that. Okay. Acha. So yeah, the main question again. If not specified, you have to assume it's without replacement. Let's come back to this. आपके पास values आ गई 0.3. इसकी R की value आ गई. So P Q R की values भी क्या होंगी? These are going to be 0.5 here, 0.2 here, 0.3 here. अब ये probabilities change नहीं होंगी because पहले दिन जो भी हुआ बाकी दिनों में इसी तरह होगा ठीक है बाकी दिनों में भी वही probabilities रहेंगी it doesn't matter कि पहले क्या हुआ था बाद में भी आपकी वही probabilities रहेंगी Monday is not affecting what happens on Tuesday. To find the probability that Ben travels to work by bus on Monday and Tuesday. Okay, so he travels on by bus on both Monday and Tuesday. So what do you have to do? You're basically looking for this case. Bus on Monday and by bus on Tuesday. So that's 0.5 into 0.5. Okay, that's going to give you 0.25. क्योंकि हम horizontally जा रहे हैं, we multiply. So we have 0.25 there. So we say this is 0.25. Acha. Very good. So yeah, so all of you got it correct. Yes. What about the second one? By bus on one day and by bicycle on the other day. So let me shade it using a different color now. एक दिन बस पे दूसरे दिन bicycle पे. Now we are not specified किस दिन बस पे गया और किस दिन bicycle पे गया. We don't know that, right? So one possibility is he goes by bus on one day and then the second day he goes by bicycle. This is one possibility. The other possibility is he goes by bicycle first on Monday and then he goes by bus on the second day. So there are 2 possible cases, right? एक आपके पास case है bus and bicycle
first day bus, second day bicycle, दूसरा केस है first day bicycle, second day bus, because we don't know किस दिन बस पे गया और किस दिन bicycle पे गया, right? एक दिन बस पे होना चाहिए, एक दिन bicycle पे होना चाहिए. So what is the probability of the first case here? 0.5 into 0.2. Let's multiply them. 0.5 into 0.2. Similarly here we've got 0.2 here and 0.5 here. Multiply the two, we get this. So this gives us 0.1. This gives us 0.1. We add both of them, vertically add karte hain, remember? इन दोनों को add कर लेंगे, we get 0.2. That is our result. This is the probability, that is 0.2 here. Okay? Does this make sense? So a lot of you got it wrong the first time. It's not 0.1, it's 0.2 here. Okay. All right, good. Let me just look at what other questions I have in line. Let me just do one more question before we end. In fact, before we take a break, and then we will do some more complicated questions in the second half after this. Okay? एक नमाज break लेंगे हम 15 minute की, 10 to 15 minute break, and then we will continue with 3 to 4 more questions that are slightly more complicated. I mean, it's not necessarily trees, but we have some other things involved as well. But I just want to do one more question before we end. So let's do one more question before we end. That relates to trees. I just want to do that before taking the break. All right, let's have a look at this. So Kelvin chooses a pair of trousers and a shirt. No, Minahil, you will join again. I will end this session and I'll start it again. So you can join. You'll have to join again. Okay. So Kelvin chooses a pair of trousers and shirt to wear for college. He chooses gray trousers or black trousers. There are two options. He chooses a red shirt or a yellow shirt. So trousers में दो options है, gray or black, and we have two options for shirt, red or yellow. The probability that he chooses gray trousers is 1/3. Oh, so that's 1/3. The probability that he chooses the red shirt is 4/5, so that's 4/5. His choice of shirt is independent of his choice of trousers. ठीक है, तो shirt और trouser जो मर्जी choose करे, shirt की probability पे कोई impact नहीं होता. Right? So you can just complete the street diagram. So this is 1/3. अगर ये 1/3 उसने बताया है, तो black की probability कितनी हो जाएगी? 1 minus this, that's 2/3. Right? If this is 4/5, red shirt की probability, तो yellow की क्या probability होगी? That will be 1/5. ठीक है, similarly, red की probability 4/5, यहाँ पे 4/5 लिख दिया, yellow की probability 1/5. That's it. That completes the tree. Okay? Let's find the probability that Kelvin chooses gray trousers and a red shirt. Okay. So gray trousers and a red shirt. Trousers gray होने चाहिए, shirt red होनी चाहिए. What is that probability? That's 1/3 multiplied by 4/5. Right? Horizontally जाएंगे, multiply करेंगे, we get 4/15 there. Right? Fairly straightforward. But the next is, what is the probability that Kelvin does not choose either black trousers or a red shirt? Okay. Now this is a bit tricky. It's negation. Does not choose either black trousers or a red shirt. Let me erase what I did earlier there. So that's 4/15. I can write that there. Okay. How do we do this now? What is the probability that Kelvin does not choose either black trousers or a red shirt? देखिए, it's important to understand the statement correctly. ब्लैक ट्राउजर्स भी नहीं पहन सकता और रेड शर्ट भी नहीं पहन सकता. इसका मतलब ये हुआ, रेड शर्ट वाली सारी पॉसिबिलिटीज खत्म, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. ग्रे ब्लैक ट्राउजर्स वाली सारी पॉसिबिलिटी खत्म.
ये भी नहीं हो सकता, एक black trouser नहीं हो सकता. What are we left with? There's only one possibility left. That's gray trousers and yellow shirt. That's 1/3 into 1/5. And that gives us 1/15. Okay, so that's going to be 1/15 there. Now there's a very common mistake here, and that is that somebody finds this probability. It will black trousers or red shirt की probability find कर लें. Okay. There's a common mistake here कि आप क्या करो, black की probability find कर लो, black और red shirt की. So this probability, that's 2/3 into 4/5, and that gives you 8/15. And then you say 1 minus 8/15 because ये नहीं होना चाहिए. So you get 7/15. That will be incorrect. You can't do it like this. Okay, that's not what this is saying. दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता. अगर इसने कहा होता ना, does not choose black trousers and a red shirt at the same time. अगर ये लिखा होता, फिर आप ये कर सकते थे, ये वाली वर्क है. यहाँ पे इसलिए लगता है दोनों में से कोई भी चीज नहीं हो सकती. ब्लैक ट्राउजर्स भी नहीं पहन सकता और रेड शर्ट भी नहीं पहन सकता. तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को बस वहां से निकाल दोगे. दोनों में से कुछ हो ही नहीं सकता कि रेड शर्ट वाली पॉसिबिलिटी सारी निकल गई, ब्लैक ट्राउजर्स वाली सारी पॉसिबिलिटी निकल गई. वी आर ओनली लेफ्ट विद this case here, gray, yellow. Okay, so that's how we think about this. We're going to take a 15-minute break here in the previous session. So let's start with this. So there are 3 cards A, B, and C that are marked with the numbers 2, 3, and 4 respectively. One card is chosen at random. One out of these 3 cards is chosen at random. A second card is then chosen at random from the remaining 2 cards. Okay, the sum of the numbers on the 2 cards is then calculated. What is the probability that the sum is equal to 3? Okay, now that's a bit tricky, right? So 3 cards are here, 2, 3, and 4. इनको हमने choose किया. इनमें से 2 cards हमने choose किए हैं और उन दोनों cards पे जो numbers आते हैं उनको हम add करते हैं. क्या probability है कि उनका sum 3 आ जाए? Think about this. What are the numbers that we have? We have 2, 3, and 4. Is there any combination? Is there any combination that is going to give us sum equal to 3? That's not possible. Minimum numbers क्या है? 2 और 3. 2 और 3 को भी आप add करोगे, that is going to be 5. This is much bigger than 3. So this probability is just 0. You can't have this, right? कोई भी आप 2 numbers ऐसे नहीं choose कर सकते जिनका sum जो है वो 3 आ जाए. Okay, अच्छा. Now it says complete the table that's here to show all the possible outcomes. You may not need all the columns there. देखिए इसने किस तरह से outcomes fill की हुई हैं. First card, you have the second card, और फिर उन दोनों का sum जो है उसने नीचे रखा हुआ है third row के अंदर. अब क्या क्या possibilities हो सकती हैं आपके पास? First, एक उसने आपको complete करके दे दिया A and B. एक possibility क्या हो सकती है, और first A आ जाए, second C आ जाए, right? That's another possibility. You can have B and A, you can have B and C, you can have C and A, you can have C and B. These are all the possible outcomes. There are 6 possible outcomes. इसके अलावा और कोई possible outcome नहीं है. तो बाकी ये rows जो हैं, they will remain empty, and that's okay. It doesn't matter. उसने आपको बताया कि you may not need all columns, so that's fine. This is all that you have. Now you just add all of them up. A और C को add करें क्या आता है? 2, 4, that's 6, right? A और B को add करें क्या आता है? That's 5. BC is 7. AC is 6. BC again is 7. This is what we have. ठीक है? ये हमारे पास 6 possible outcomes है. What is the probability that the sum is 7? 7 आने की probability क्या है? How many possible outcomes do we have in total? There are 6 possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of those 6 possible outcomes, how many times are we getting 7? 2 times. 1 and 2. So that's 2/6. So that's 1/3. That is the probability. Okay. Now it was slightly different from the usual probability questions, but again, you need this ability to be able to think logically
sometimes as well. So that's what you had to do there. And that completes this problem. Okay. All right. Let's have a look at the next one. Okay. Next we have this here. Okay. Let's look at this now. So the waiting times of some people, of 50 people at a supermarket checkout were recorded. All right. And they're given in the table below. Supermarket पे checkout पे कितना उनको wait करना पड़ता है, right? वो final payment से पहले उनको कितना wait करना पड़ रहा है. So the time is given in minutes here. 1 to 3 minutes कितने लोगों को लगे? 4. Similarly, 9 to 12 minutes, 6 लोगों को wait करना पड़ा, and so on for the rest of them. Okay. Now one person is chosen at random from the 50 people. The total number is 50, right? And sub numbers का sum जो आ रहा है यहाँ पे, that is 50. That is what is given there. Total number 50 है. Now one of these people is chosen at random. Write down the probability that this person waited less than 1 minute. Okay, less than 1 minute wait करने की probability क्या है यहाँ पे? What do you think? Less than 1 minute. 4 over 50? Think again. 4 over 50? It's 0, right? जो least हमारे पास आ रहा है वो 1 to 3 minutes है. Less than 1 minute तो है ही नहीं यहाँ पे. उन 50 में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको 1 minute से कम wait करना पड़ा. So that's a 0, right? This probability is 0. What about more than 5 minutes? 5 minutes से ज़्यादा. 5 minutes से ज़्यादा तो बहुत सारी possibilities हैं. You can have this one, you can have this, you can have this. You basically add all of them up. 5 minutes से ज़्यादा कितने लोगों को wait करना पड़ रहा है? Total is 14 plus 8 plus 6. So we say 14 plus 8 plus 6. The probability क्या हो जाएगी? उसने probability पूछा, आपसे number नहीं पूछा, so that divided by 50, which is 28 over 50, which is 14 over 25. That's the probability. Okay. अच्छा, उसके बाद वो कहता है a second person is now chosen at random from the remaining 49 people. From the remaining 49 people. Expressing each answer as a fraction in its lowest terms, calculate the probability that both people waited more than 5 minutes. Both people waited more than 5 minutes. Now this is a bit tricky, right? अब देखें, more than 5 minutes की probability क्या है? We have already figured that out earlier. इसको हम यहाँ पे original वाली को लिख लेते हैं. अच्छा, इस तरह के questions के अंदर दो probabilities use करनी हो आपने. It's easier to use unsimplified form, right? Non-simplified form. So probability of waiting more than 5 minutes. Probability that someone waited more than 5 minutes is equal to 28 over 50. We've already figured that out earlier. Now, what is the probability that both people waited more than 5 minutes? The first person की probability of waiting more than 5 minutes was 28 over 50. Second person की कितनी होगी? So first waited more than 5 minutes, that's this. Okay? Probability that the second person waited more than 5 minutes. अब कितने लोग रह गए हैं? कितने लोग रह गए हैं? 49 लोग रह गए हैं. ठीक है? कितने लोग रह गए? 49 लोग रह गए. उसमें से कितने लोगों ने वेट किया ग्रेटर देन 5 मिनट्स? एक तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है. 28 में से एक ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है. How many are you left with? You have 27 left. So what is the probability now that both waited more than 5 minutes? That is 28 over 50 for the first one, multiplied by 27 over 50 for the 27 over 49 for the second one. Does that make sense? It's the same case. So हमने पहले बात की थी. When it's not given, so without replacement की बात जो की थी, and it's not explicitly written. यहाँ पे तो खैर explicitly बता भी दिया. उसने remaining 49 people से choose किया. तो उसने probability क्या पूछी आपसे? Both people waited more than 5 minutes. Probability that both waited more than 5 minutes. So Minal, we have already calculated the probability that the first person waited more than 5 minutes. That was 28 over 50. The probability of the first person waiting more than 5 minutes was 28 over 50.
We already have that. अब एक बंदा यहां से कम हो गया. So this is now इनमें से 28 थे, 28 की बजाय now these are 27 people. इन 28 में से एक कम हो गया, में से एक कम हो गया, we're left with only 27. और टोटल में से भी एक कम हो गया, that's 49. सेकंड पर्सन की क्या प्रोबेबिलिटी है वो 5 मिनट से ज्यादा वेट करेगा? That is 27/49. तो बाकी 27 रह गए और बाकी टोटल में से 50 में से 49 लोग रह गए. That is 27/49. So what is the total probability now? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट पर्सन ने 5 से ज्यादा वेट किया, 5 मिनट से ज्यादा, एंड सेकंड पर्सन आल्सो वेटेड मोर देन 5 मिनट्स. ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? इनका मल्टीपल, इनका प्रोडक्ट, दैट्स दिस नंबर. इसको आप सिंपलीफाई करके लिख दोगे. Calculated, so of course 28 into 27 divided by 50 divided by 49, that is 54/175. Okay. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है? One person waited more than 5 minutes and the second wait and the other waited, हमें नहीं पता कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, and the other waited 5 minutes or less. Okay. अब हमने देखें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज पहले फिगर आउट कर ली हुई हैं. Probability that someone waited more than 5 minutes, that was 28/50. So let's actually make a grid here that will make it easier for you to think about it. ये हमारा first person है, ये हमारा second person. ठीक है. अब क्या क्या possibilities हो सकती हैं? Possibility first, आपका first को 5 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़े और दूसरे को 5 मिनट से कम वेट करना पड़े. Is this clear? Let me actually use words there. So more than 5. Second is less than or equal to 5. ठीक है? That's the first possible case. Second possible case क्या हो सकता है? Less than or equal to 5, पहले वाला, और दूसरा जो है उसको more than 5 वेट करना पड़े. Does this make sense to everyone? ये क्लियर है? ये दो पॉसिबल केसेस है ना. एक को more than 5 मिनट्स वेट करना पड़े और दूसरे को less than or equal to 5 मिनट्स वेट करना पड़े. ये प्रोबेबिलिटीज क्या होगी इनकी? more than 5 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? more than 5 की प्रोबेबिलिटी इज फर्स्ट more than 5 वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? That is 28/50. Now, given that the first waited more than 5 minutes, second के less than or equal to 5 वेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बाकी कितने लोग हैं? 28 में से बाकी 22, right? So अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 28/50 थी, less than or equal to 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी? Or equal to 5 वाली प्रोबेबिलिटी कितनी थी? That was 22/50. लेकिन अब यहां पे क्या है? Yes, Manahil, that's very good. 22 तो वो लोग हैं, लेकिन टोटल कितने रह गए हैं? That's 49. So 22/49. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली जो सेकंड केस है उसमें क्या आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू 5. पहले बंदे की अगर लेस देन इक्वल टू 5 वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 22/50. दूसरे की फिर मोर देन 5 वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 28/49. ठीक है, ये आपके पास केस बनेंगे. आप इसको ट्री से भी कर सकते हो, ट्री डायग्राम बना के आप इसको उस तरह भी सोच सकते थे. दैट वुड आल्सो वर्क, बट दिस इज व्हाट यू वुड गेट इवेंचुअली फ्रॉम हियर. लेट्स write it down here. It's going to evaluate 2. ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका. इसे 28/50 multiplied by 22/49 plus 22/50 multiplied by 28/49. ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट. ये दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों को आपने फाइंड कर लिया और उनको ऐड कर लिया. इट कुड बी आइदर द फर्स्ट वन और द सेकंड वन. यू विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम. ठीक है, so Simon is telling us
this is going to be 88 over 175. Okay. All right. So now this is quite tricky. So I hope this makes sense. Let's look at the next one. Okay. Now let's look at this one. So there are two boxes here, box 1 and box 2. Box 1 contains 2 white balls, box 2 contains 4 white balls, and 4 white balls and 3 black balls. Okay, so box 1 के अंदर सिर्फ 2 white है. Box 2 के अंदर we've got some white and some black. Now this person Anne chooses at random 1 ball from each box. Find the probability that these balls are both black. Right? Both black. एक box 1 से choose की, एक box 2 से choose की. What is the probability that both are black? Box 1 के अंदर तो black है ही कोई नहीं. So the probability of both being black is just 0, right? So this is a 0. Exactly. So that's a 0 because दोनों black हो ही नहीं सकती. That's not possible. Find the probability that these balls have different colors. Now there's only one possibility, and that is कि पहली white हो, पहली में से white निकले. White आने की क्या probability है पहले में से? तो first white होनी चाहिए, and second जो है that should be black. First white की probability is just 2 over 2, right? One probability है, because है ही white तो white ही निकलेगी उसमें से. You can say 2 over 2. That multiplied by second black की क्या probability है? That's 3 over 7, right? So you get 3 over 7 there. That's the probability. Okay, very good. Now let's look at the next part. It says from the original contents of box 2, Bell chooses at random 2 balls without replacement. Okay, so the ball that you're taking out, you're not putting it back. Find the probability that these balls are both white. Second box से निकाल रहे हैं, okay? Second box से. अच्छा. From the original content, जो आपको नजर आ रहे हैं वहाँ पे original contents. 2 balls without replacement, the probability that both are white. Okay. First white की probability क्या होगी? First white चाहिए और second भी white चाहिए. First white की probability, what is that? That's 4 out of 7, right? Very good. And second white, मतलब एक white आपने निकाल ली, तो कितने white रहेंगे उसके अंदर? You have 3 white balls left. Out of how many? Out of 6. So 3 out of 6. 4 out of 7 into 3 out of 6. And you just evaluate this and you see what you get from this. 12 over 42, which is 2 over 7. That's what you get. Very good, Shivam. So this is what we get. That's 2 over 7. All right. Okay, let's look at the next one. Carla chooses one of the boxes at random. When the original box with the original box contents, she then chooses at random 1 ball from this box. Find the probability that the ball is white. Now, think of what is happening. There are 2 steps that are happening here. Why is 1 0? Because both balls cannot be black, Manahil. First box के अंदर देखिए दोनों boxes में से एक ball निकाली है. First box से एक ball निकाली, second box से एक ball निकाली. First box के अंदर तो black है ही नहीं. That's a 0, right? ये possible ही नहीं है कि दोनों black आ जाएं. First box के अंदर तो black ही नहीं. Okay. अच्छा, now Carla chooses one of the boxes at random. अब देखिए उसने दोनों boxes में से एक box choose किया है पहले. You can think of it as a tree. That might help you think better. पहले उसने क्या किया? एक box choose किया. Box 1 या box 2. दोनों की probabilities equal हैं. Boxes तो एक तरह के हैं. Half probability इसकी, half probability इसकी. Now, once she has chosen a box, she then at random takes 1 ball from this box. Find the probability that the ball is white. अच्छा, box 1 के अंदर तो है ही सिर्फ white ball. सिर्फ white ही आ सकती है, उसकी probability 1 है. Box 2 के अंदर क्या है? You can have white, you can have black. There are 2 possibilities. White की probability क्या है? 4 out of 7. Black की क्या है? 3 out of 7. So how do you find the probability that the ball is white? 2 possible case बन रहे हैं आपके पास. One possibility is that you choose the first box और उसमें से आप कोई ball निकाल लो. The other possibility is that you choose box 2 and then you take the white ball out of that. ठीक है? So how do you do that? You say
The first case is 1/2 into 1. The second case is 1/2 into 4/7. इन दोनों को add कर लें, या first result आ जाएगा. So that's going to be 1/2 plus 4/14. You can see what that is. 11/14. 11/14. That's this probability. Does this make sense? देखिए पहले बॉक्स चूज किया at random, दो ही बॉक्सेस हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी 1/2 and 1/2. जब बॉक्स चूज कर लिया उसके बाद से फिर आपने देखना है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. आपको व्हाइट वाले केस चाहिए, सो यू नीड दिस और दिस. उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली, उनको ऐड कर लिया, बिकॉज आइदर ऑफ देम विल फुलफिल योर कंडीशन. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? All right, good. Let's look at another one. Let's look at another one. And in fact, the last one for today. Then we end. Okay, so now we have this table. This table shows the number of cars owned by each of 25 families. All right. So how do you understand this? There's one family that owns 2 cars. There's another family that owns 0 cars. There's another family that owns 6 cars. There's another family that owns 3 cars. Har family ke number of cars that they own, they are shown here in this table. Okay. Now a family is chosen at random. Kitni families are 25 families. Family is chosen at random. Find the probability that it owns 3 cars. अब कितनी families 3 cars own करती हैं यहाँ पे? Let's count them. 1, 2, 3, 4, and 5. And have I missed anyone? No. So there are 5 families that own 3 cars. So we say this probability is 5 out of those 25, which is 1/5. That is the probability. Okay. All right. Now 2 families are chosen at random. Find the probability that one family owns 2 cars and the other owns 4 cars. Now there are 2 families that are chosen at random, right? Now you can have a first family here, you can have the second family here. Ab 2 possibilities hain. First can own 2 cars and the second can own, let's say, 4 cars. Or the first can own 4 cars and the second can own 2 cars. Okay? उनका order to change हो सकता है. These are the 2 possibilities that we have there. What are their probabilities now? So first, 2 cars की क्या probability है? Let's find that. 2. अच्छा, number of 2s count कर लेते हैं. पहले number of 2s count कर लेते हैं. Number of 2s कितने हैं? 1, 2, 3, and then we have 4, 5, 6. Right? Have I missed anyone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so there's 6 families that own 2 cars. So first 2 cars होने की first family जो हमने choose की, उसके 2 cars own करने की probability क्या हुई? 6 out of 25. अच्छा, अब 4s count कर लेते हैं. 4s कितने हैं? 4s are 1, 2, and that's it. So 2 out of 25 families own 4 cars. We have 2 out of 25 probability for this. ठीक है, 2 हमारे पास families हैं, इनके पास 4 cars. Now think about this. If we have chosen one family already but owns 2 cars, how many families are we left with? We're left with 24 families. तो second family के 4 cars own करने की probability क्या होगी? जितनी भी वो families हैं, 2 out of 24. Exactly, very good, Laiba. So that's what we get. Okay. Acha. Similarly here, if the first family that we have chosen owns 4 cars, we are left with only 24 families now. How many of those 24 own 2 cars? 6. So that's 6 out of 24.
We have these two possibilities. अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में से कोई भी हो सकती है. You just add both of them and we get our result. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लें, आपको रिजल्ट आ जाएगा 6 out of 25 into 2 out of 24 plus 2 into 6 divided by 24 divided by 5. That's going to be 1 over 25. So the final result therefore is 1 over 25. Okay. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं वो? Now a car is chosen at random. Just bold किया हुआ इसलिए ताकि you pay attention to that. You're not choosing a family now. You're choosing a car. A car is chosen at random. Find the probability that it belongs to a family which owns 2 cars. Okay. How many families own 2 cars? There are 6 families that own 2 cars. So 6 families own 2 cars. How many cars does that become? 6 into 2, that's 12 cars. अब हम कार के लेवल पे बात कर रहे हैं. We're not talking about families here. We're talking about cars. There are 12 cars that are owned by those families that own 2 cars. Does that make sense? 12 cars ऐसी हैं that are owned by those families that own 2 cars. Now, how many cars do we have in total? We have to count that. ये हमें सबको count करना पड़ेगा. We add all of these numbers up. That will give us the total number of cars. इन सारे numbers को add करना पड़ेगा. Right? So you can add all of those numbers. अब एक order में चलें, row wise चले जाएं या column wise चले जाएं so that you don't miss anything. Okay, a car is chosen at random, Nahil. So let's put it another way. A car is chosen at random. कितनी cars हैं इसमें से आप choose कर रहे हो? Let's figure that out first. How many cars do we have in total? Let's figure that out. कितनी cars हैं? अब ये number of cars लिखा हुआ है for each family. एक family for instance 6 cars own करती है, एक और family 4 cars own करती है, एक और family 0 car own करती है. Total cars कितनी हुई? That's the sum of all these numbers. Let's add all of these numbers up. या calculator पे कर लें या mentally कर लें, column wise चल लें या row wise चल लें, इनको count कर लें, इनको sum कर लें, इनको add up कर लें. Total क्या आता है? Let's count them. 4, 5 and 8. 8 and 4, 12. 12 and 6 is 18. 18 and 10, 28. 29. 29 and 7, 36. 36 and 5, 41. 42, 45, 48. I'm getting 48. Can somebody confirm that? 48. Okay. So the total number of cars is 48. 48 cars में से आप एक randomly एक car choose कर रहे हो. उसने कहा find the probability that it belongs to a family that owns 2 cars. अब इसमें से कितनी cars ऐसी हैं that belong to those families who own 2 cars? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 such families. 6 families, each of them owns 2 cars. Total कितनी cars हुई? 12 cars. 12 cars satisfy this condition. तो उसने condition दी हुई है. So what is the probability therefore going to be? The probability is going to be 12 over 48, which is 1 over 4. Okay? That's 1 over 4 there. And that's it. So we end our probability topic here. So I hope this was helpful. I wish you all the best for your exams because this was our last session on noon. If you want more, as I've told most of you before, you can head to this channel and by tomorrow, inshallah, I would have uploaded all my paid class, all the recordings of my paid class there on this channel. You can have a look at them if you think they would help. But that's it for this session. हमारे पास हमें जितना नून के ऊपर cover करना था. No. This is for the July series. This is for the July series. Basically, I teach A levels on noon primarily. आप YouTube पे भी देखोगे. Mostly the content there is for A levels. अभी I'm just doing this for this July series. I might not be teaching O level for the October-November session or later, or I might do it at the end maybe for a few sessions, but it will not be regular.
Okay, but you can find a lot of content on the YouTube channel there. I'll be uploading all my recordings of the paid classes there as well. Sare topical sessions, sare yearly past papers, all जो हमने cover किए हैं वहाँ पे, you can have access to them there. But for this session on noon, for the July series on noon, this is all that we were going to do. Okay. For the October-November session, Salma, I will be teaching A-levels. So I am teaching A-levels in parallel anyway, वैसे. But I will be trying that I upload most of the O-level content, at least the important topics, तो हमारे major topics हैं. I'll be trying my best कि मैं उससे पहले मैं उनकी सबकी recordings YouTube पे upload कर दूँ, so you can have access there. But I might not be doing live classes regularly. I will probably do in September, closer to the exams, तब मैं करूँगा. But they will be just, on and off. I will not be doing them regularly, so you can have access there. Just make sure all of you sleep well. That's one very important thing that you should remember for your exam. Sleep well. Do not get stuck at any particular question. Even if you're aiming for, the highest marks, even if you're aiming for a distinction, for an A-star, it does not mean you're going to get every question right in the same order. कि आप first question से start करोगे और सारे questions आपसे होते जाएंगे. It's not necessary. If you have any question on which you get stuck, leave that for a while. बाकी questions पे continue करें. Come back to that later, and that will increase your probability of doing that question well, and also increase the probability कि आप अपना confidence lose नहीं करोगे. अगर आप एक question के ऊपर बहुत ज़्यादा time spend कर दोगे और आपसे वो नहीं होगा, तो it will make you lose confidence और आपका time जो है बाकी questions के लिए short रह जाएगा. अक्सर होता यह है कि कुछ आसान questions जो है वो spread out होते हैं across the exam. You have to make sure that you do every one of those papers and you don't run out of time before you are able to attempt all of them. So that's why it's important. आपको कोई question ऐसे 3-4 marks का है, आपने उसको उस पे 3-4 minute लगा दिए हैं, and you are not able to figure that out at that point. आप उसको skip कर दो, do the rest of the paper, and then come back to those questions that you skipped at the end. उसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा आपने लूज नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से लोग पैनिक करते हैं और फिर एंड पे जो क्वेश्चन आते भी होते हैं वो भी रह जाते हैं. So do not do this mistake of getting stuck at any question, and that should be helpful. Have proper sleep. That's really important for math exams कि आप सही तरह से सो के आए हो, otherwise आपका दिमाग काम नहीं करता वहाँ पे properly. ठीक है? So don't spend a lot of time at night, doing more practice. Notes revise करें बस आखिरी दिन, बहुत ज़्यादा practice की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, and that should help. Manahil, we are multiplying by 2 there because देखें number of cars की बात हो रही है ना. There are 6 families that own 2 cars, right? 6 families हैं that are owning 2 cars. Okay, so कितनी cars हैं in total? There are 12 cars in total that are owned by these 6 families. हम car के level पे बात कर रहे हैं. That's why we have to find the number of cars that are owned by these people, by these families, जिनके पास 2 cars हैं. So number of cars कैसे निकलेंगे? 6 families, each of them owns 2 cars. That's 12 cars in total. Okay. All right, you're all welcome. I will see you again at another time, maybe. So wish you all the best for your exams. That's all that I had to do in this session. And I do hope that you will be doing well in your exams. And maybe I'll see you sometime later in A-levels. So we have regular sessions for A-levels here going on. And you'll also find a lot of content there. Content on A-levels on my YouTube channel as well, so you can also have a look there. So I hope you all do well in all of your exams, including maths. So that's it. Allah Hafiz, and I'll see you again. Take care.